सो जैसे मैंने कहा कि आज हम एक नई टेक्नोलॉजी का लॉन्च कर रहे हैं। सो ये जो है डर्मेटोलॉजी या स्किन की प्रैक्टिस जो है उसको एक नए स्टेप पर ले आएगी। ये हमने जो है आपको ऑलरेडी ये वीडियो दिखाया है और हम आपको इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे कि कैसे जो है लेज़र लाइट के थ्रू जो है स्किन में जो है 11 कंडीशंस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चलता है और फिर उसका जो है ट्रीटमेंट भी डिफाइन होता है और कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए वो भी आते हैं। So this is the machine which is imported from, which you can see over here. This is imported from South Korea, and like I said, this is the first time in India. It takes just a few seconds. You have to put your head in over there, and just like how you take a photograph, there are few laser cameras inside which capture your skin from all angles. And what it does is it actually goes, the skin has got two layers, the dermis and the epidermis. So the epidermis is the kind of top layer, so you get to know all the superficial things which are there. And then you have the dermis which is the deeper layer. तो क्या होता है कि इस मशीन के द्वारा जो है वो जो अंदर का हिस्सा है उससे भी आपको पता चलता है कि where is all the pigmentation, where is all the sebum for example, all the oiliness of the skin, कहाँ पे ज़्यादा है और उस हिसाब से जो है वो मैप करके कोई ट्रीटमेंट आपके लिए प्लान करता है। तो जैसा मैंने बताया कि दिस इज फ्यूचरिस्टिक और स्किन का प्रॉब्लम आने से पहले भी पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम होने वाला है। इट हैज़ अ हाई लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन और वो हम आपको बताएंगे डेमोन्स्ट्रेशन में कि कैसे जो है उसे पूरा कौन से एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में जो है ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल समझिए अगर आपका स्किन जो है इस एरिया में ज़्यादा ऑयली है तो फिर जो थेरेपिस्ट है जो ट्रीटमेंट दे रहा है वो आपको इस एरिया में ज़्यादा फोकस करेगा एंड सो वी कैन हेल्प विद दैट। सिमिलरली इफ यू हैव पिगमेंटेशन in one spot, then you can give additional treatment in that spot. So this is all personalized treatment, very customized, and that's why it's so important to have something like this. Artificial light treatment solutions, personalized treatment, but it's also important in case में जो है होम्योपैथी का भी मिशन किया गया है, and this is the first time that we are using homeopathy, which is one of the newest sciences with artificial technology. So it's something new that we have brought forward to homeopathy as well, and it shows instant treatment outcomes. So for example, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, there is also aesthetic treatment और आप 45 मिनट से 1 घंटे के बाद अगर आप वापस स्किन टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्किन में कितना फ़र्क आ गया है। सो जब मैं 60 साल का था, 12 साल हो गए, अभी मैं 72 का हूँ। जब मैं 60 साल का था, I was one of the oldest students in Harvard. I went to Harvard to do a course of medical residence. तो वहाँ पे जो एक one of the biggest challenges that the medical field was facing at that time was how do you measure medical outcomes. So वहाँ से आने के बाद 12 साल में मैंने बहुत रिसर्च किया अपने डॉक्टर्स के साथ। यहाँ पे डॉक्टर बिंदु बैठे हैं और डॉक्टर वैशाली भी हैं और हम लोगों ने फिर जो है बहुत सारा रिसर्च किया और ऐसी ट्रीटमेंट्स लाए which can be measurable. So हम ये नहीं चाहते हैं कि होम्योपैथी जो है सब्जेक्टिव हो, हम ये चाहते हैं कि होम्योपैथी जो है ऑब्जेक्टिव हो, यानी आप उसका ट्रीटमेंट जो है मेजर कर सकें। तो this instrument will actually help us to measure the instrument and the success of all our skin treatments, which is again for the first time. So this is how patients will be benefited. It will detect skin problems before they come. You can prevent diseases as well. You can get better results as well. You can get a personalized treatment and you get instant results as well, and also home care. So you can also get products which are specialized which you can carry back home and use them. So ये एक ऐसे भी सैंपल है, हम जो आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे उसमें आपको इसका ज़्यादा पता चलेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एक यूवी लाइट है और ये जो है पिगमेंटेशन का केस है। तो पता चलता है कि जहाँ पे वो डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पे जो है पिगमेंटेशन ज़्यादा है, जहाँ पे लाइटर स्पॉट्स हैं वहाँ पे पिगमेंटेशन कम है। और यहाँ पे जो आप 48 देख रहे हैं वो एक रेशो है जो कंप्यूटर दिखाता है कि कितना परसेंटेज का उसको है उसका पिगमेंटेशन है और किस जगह पे है ज़्यादा। तो सुपरफिशियल है, डीप है, उसकी वैल्यू क्या है, वो सब इसमें आती है और इसके थ्रू फिर आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है नॉर्मल इमेज है पहली वाली, और तो सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आप देख सकते हैं कि कितनी सारी उसमें जो डॉट्स हैं, यू कैन एक्चुअली सी कि कहाँ पे जो है ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है सीबम का, यानी ऑयलीनेस ऑफ स्किन। तो वन ऑफ द रीजंस फॉर एक्ने यानी पिंपल्स का जो एक कारण होता है, बहुत कारण होते हैं, पर जो एक कारण होता है वो है ऑयलीनेस ऑफ स्किन।
तो क्योंकि ज़्यादा स्किन ऑयली होता है वो ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए पिंपल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कौन से एरिया में जो है, और नॉर्मली जो है वो टी जोन जिसको कहते हैं वहाँ पे होता है ज़्यादा। यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटोग्राफ में कि जो स्कैन फोटोग्राफ है उसमें आप एक्चुअली एरिया देख रहे हैं कहाँ पे वो ज़्यादा है। तो इसलिए जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाएगा उस एरिया के ऊपर फोकस किया जाएगा, एंड दैट इज हाउ यू कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। इसी तरह से अगर कोई स्किन का प्रॉब्लम है, जैसे स्किन इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे सोराइसिस में होता है, डर्मेटाइटिस में होता है, यू नो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में होता है, तो कोई भी स्किन प्रॉब्लम जब होता है तो उसमें रेडनेस होती है, उसमें ऐसी इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो ये जो है नॉर्मल लाइट में स्किन ऐसे दिखती है, पर अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इन्फ्लेमेशन है वो वहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, और इसलिए आपको पता चल सकता है कि कहाँ पे जो है ये ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इस पेशेंट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो पहली पिक्चर है वो जो है नॉर्मल कैमरा से ली गई है, और जो दूसरी पिक्चर है वो ये जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है उससे ली गई है, और आप देख सकते हैं कि कितना उसमें फ़र्क है। ये एक सेशन का आउटकम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहली पिक्चर है वो पहले ली गई है और 3 घंटे बाद दूसरी पिक्चर ली गई है, और आप देख सकते हैं कि जो एनालिसिस है वो 168 से 61 हो गया। तो एक ट्रीटमेंट का आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हर ट्रीटमेंट जो मरीज लेगा उसका हर ट्रीटमेंट जो है मेजरेबल है, और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सामने आता है। सिमिलरली ये जो है हाइपर पिगमेंटेशन है, जिसमें ज़्यादा जो है ब्लैक स्पॉट्स हैं, और आप देख सकते हैं कि इसका क्या फ़र्क है वापस 3 घंटे के बाद, वापस एक ट्रीटमेंट के बाद ये लिया गया, और आप देख सकते हैं वहाँ पे जो पहले 23 था वो 16 हो गया। तो अगेन इट इज़ मेजरेबल, यानी कितना पिगमेंटेशन था बॉडी में और कितना कमती हो गया अभी ट्रीटमेंट के बाद। सो अगेन द सेम थिंग, कि मेडिकल आउटकम्स आर ऑब्जेक्टिव, दे आर मेजरेबल, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू दिस लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट। So these are some of the new treatments that we are going to introduce through this, which we will talk about. Dr. 𝗙់_𝗿 will talk about it. So of course homeopathy is there, and aesthetic solutions and home care with our products. And here you can see all of them. So basically for acne, for skin brightening, pigmentation, for anti-aging, and generally for keeping the skin young. And this is, the certificate of the company to say that this is the first time in India that this is being launched. So thank you very much. अभी मैं डॉक्टर वैशाली, जो हमारी एस्थेटिक्स की हेड है, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके एक यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करें। आई वुड हैप्पी टू हैव एनी वन पर्सन टू कम फॉरवर्ड, एंड या प्लीज कम, मैडम, वन एट द बैक कम, एंड वी वुड लाइक, वी आर वेरी हैप्पी कि जब ये कार्यक्रम खत्म हो आप लोग एक एक करके आके अपनी स्किन को टेस्ट करा सकते हैं। उसमें से आपको फिर आप गेटिंग अ रिपोर्ट ऑल्सो प्रिंटर, सो विल ऑल्सो गिव अ रिपोर्ट टू कैरी होम एंड यू कैन हैव अ लुक एट इट। इट्स वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। जस्ट एक 2 सेकेंड रखते हैं एक टेस्ट में। प्लीज आइए मैडम, कौन आने वाला है? ओके, You have to put your chin here. We'll be closing it. Don't get scared. It's just 2 minutes. Not even 2 minutes. Just 10 seconds. You will hear the click, 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 and then it will be out. Okay, so smile, say that's cheese. it. You can keep your eyes shut. Yeah, you have to keep. No, 1 minute. Just rest. अपनी आंखें बंद करिए और 4 टाइम जो है कैमरा क्लिक करिएगा। अभी पोलराइज इमेज जो है वो शूट हो रही है, आधी कंप्लीट हो गई है, अभी उसको प्रोसेस किया जा रहा है और खत्म हो गया। That's it. Simple. तो सामने क्या है? See how fast it is getting analyzed with the huge data which is there in the server. Within a matter of 4 seconds, Yes. we have the analysis in front of us. This is the complete report of the patient, where the system has analyzed her face, and we can see that in the center of the report we can see her concerned areas and the areas which are relatively okay. So the red zones that you see, which is the wrinkle and the skin tone, is showing in the red, which means it is something which needs attention. However, her pores, spots, meaning pigmentation, elasticity is okay. As far as the skin type is concerned, you can see that her skin has enough moisture and low oil. Okay? And then her skin age is very
near to her normal age, which is good, ma'am. And that side you can see that what is the symmetry between the left and the right side of the face. जैसे इनके केस में you can see कि right side में थोड़ी तकलीफ ज़्यादा है, जैसे इनके जो wrinkling है या skin tone की जो unevenness है वो right side में ज़्यादा महसूस होगी. And नीचे आपको सिस्टम ने रिकमेंड कर दिया कि इनको किस किस्म की ट्रीटमेंट्स लगने वाली हैं. यू कैन सी प्रोडक्ट्स कौन से लगने वाले हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी लगने वाली है. द सिस्टम विल हेल्प द डॉक्टर टू अराइव एट अ ट्रीटमेंट एंड फर्दर जो रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर को और कस्टमाइज करने में हेल्प करते हैं. जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 16 डिफरेंट टाइप की स्किन कॉम्बिनेशंस होती हैं, जैसे ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, पिगमेंटेशन, नॉन पिगमेंटेशन, सेंसिटिव स्किन, नॉन सेंसिटिव स्किन, किसी के डार्क सर्कल्स हैं नहीं हैं, एक्ने हैं नहीं हैं. सो उन सारे स्किन टाइप्स में से एनालाइज करके हमको पेशेंट की स्किन टाइप मिलती है, जो कि है ड्राई, रेजिस्टेंट, नॉन पिगमेंटेड बट रिंकल्ड. यानी ड्राइनेस और रिंकलिंग अगर महसूस हो रहा है रिपोर्ट से, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस पेशेंट को जो प्रीमैच्योर एजिंग के चेंजेस हैं वो शुरू हुए हैं. एंड दैट इज एज अ डॉक्टर वी हैव टू अटेंड टू दोज कंसर्न्स ऑन प्रायोरिटी. These are spots. अब इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है मेडिकली हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए कि ये जो स्पॉट्स आ रहे हैं, जो पिगमेंटेशन आ रहे हैं, ये कितने डीप हैं और कितने सुपरफिशियल हैं. जैसे सर ने कहा कि अगर ये ऊपरी तह पे है स्किन की, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, तो उसकी प्रोग्नोसिस अलग होती है, बेहतर होती है, जल्दी रिकवर होती है. जितना कि अगर ये डीप जाता है, जिसको हम डर्मल चेंजेस कहते हैं, तो वो पिगमेंटेशन को ट्रीट करने में या उसको एडवांस ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है. सो ऑल दिस दिस पर्टिकुलर एनालाइजर शोज अस. इनके केस में हम देख सकते हैं कि जैसे अंडर आई ई एरिया है, राइट साइड की अंडर आई, या वहाँ की जो आँख के पास की एरिया है, दीज आर द एरियाज व्हिच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड शोइंग द पिगमेंटेशन चेंजेस. स्किन जो है, एक तो इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एंड सेकंड थिंग इज इट्स आल्सो द मोस्ट एक्सपोज्ड. एंड व्हेनेवर इट इज मोस्ट एक्सपोज्ड, इट इज दैट मींस it has variable effect of the weather, dust, धूप. जैसे अभी हम ब्लू से आए हैं तो हमारा स्किन जो उसको रिएक्ट करेगा. Also it has got the two other things I think which we try to suggest, which is also correct, are hormonal changes. So with hormonal changes, women also the skin changes. And the other part which also I like to add is also mental stress. So the skin is actually an indicator of human stress. तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं चमड़ी की, जो जैसे डर्मेटाइटिस है, इट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस. सो विच इज़ वाई कि ये जो ट्रीटमेंट जो है, जो आपको दिखाया हुआ जो मशीन है, इट बेसिकली कैप्चर्स ऑल दी नॉन वेरिएबल पार्ट्स, एंड द वेरिएबल पार्ट्स विल हैव टू आइदर गो थ्रू कंसल्टेशन, थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस, एंड ऑल्सो थ्रू होम्योपैथी विच इज़ एन इंटरनल ट्रीटमेंट. सो समटाइम्स यू नीड बोथ. तो वो प्रोडक्ट्स एकदम से सब तो कई नए हैं, कई पुराने हैं. तो हमारे पास 125 प्रोडक्ट हैं फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी के. अभी 125 प्रोडक्ट में से यहाँ से 10 या 12 प्रोडक्ट्स ही चुने गए हैं. सो ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच एक्चुअली विल हेल्प दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विद द रिसर्च टीम, एंड दोज आर द वंस दैट आर देन रिकमेंडेड. एंड देन द IT team has kind of linked this all together and linked the homeopathic treatment, linked the aesthetic treatment, and linked the product. So there's a lot of IT integration which is specifically done only by our company, by a team of IT specialists, together with our doctors, to get the maximum benefit from the machine. हाँ जी सर. क्या होता है, जब हम एक्सरे निकालते हैं तो फिर हम एक लेड कोट इस्तेमाल करते हैं. तो लेड इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक्सरे जो है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं. इसमें कोई लेड नहीं है, ये तो सिंपल फोटोग्राफी है. जैसे उसने बताया कि ऑल दैट वी आर डूइंग इज वी आर ओनली, जैसे पुराने जो पोलराइड जो हैसेलबर्ग कैमरा होते थे और हम पोर्ट्रेट करते थे, यहाँ पे कई फोटोग्राफर होंगे, मैं भी एक फोटोग्राफर हूँ, तो पहले हम जो है ऐसे कवर करते थे, एंड द आइडिया ओवर देयर वाज जस्ट टू अवॉइड लाइट. सो इसी तरह से ये जो है, इट्स ओनली अ क्लॉथ, इट्स नथिंग टू डू विद लेड और नथिंग टू विद, सो देयर इज नो हार्मफुल इफेक्ट. नंबर 2 इज के आप कितने समय तक ले रहे हैं. आपने देखा कि ये तो चंद सेकंडों के लिए ले रहे हैं, ओनली फॉर फ्यू सेकंड्स. सो ए इट इज एनीवे हार्मलेस, बी यू आर टेकिंग इट ओनली फॉर अ फ्यू सेकंड्स. सी जब आप धूप में जाते हैं तो इससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट आपके बॉडी के ऊपर पड़ती है. योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट any other body parts. any other one. So the answer is no. So the answer is this only for the face, and that's a very simple, short question, short answer. You cannot. We tried actually to see whether we can use it in any other part, but it cannot. It doesn't work.
but you know the face is the exposed part, and normally it's reflective of anything else. So for example, even if you have a generalized condition, for example psoriasis, since you raised that topic, so very often psoriasis will come on the forehead, it will come on the face, so and then it will come on the rest of the body. So you can still take that as a sample area as long as it's on the face. But supposing it is not on the face, supposing it's only on the elbows or on the knees, for example, then it doesn't work. So that I think answers your question. Your second was infectious. infection. So yes. So there I would say yes also, because lots of infectious diseases are bacterial, as you said, and you can actually make out that whenever you have a bacterial infection, you get inflammation. So when you get inflammation, there are signs of redness, you get swelling, you get inflammation, which are all captured by this machine. So the answer is yes. All the skin conditions. Anything about fungal infections? Yeah. So Yeah. Okay. So the fungal infections are also, these patients do have a increased oil secretions, which can, because there is a lot of seborrheic activity as we call it, which is on which actually this fungus thrives. So this is particular thing is captured. Beyond that also, as I said, that there is a element called porphyrin, which is secreted by the bacteria which causes acne, and it emits red light when it is exposed to UV. So वो भी जो है, that will also get captured. So there are a lot of medical illnesses like acne, rosacea, photodermatitis, atopic, facial psoriasis, seborrheic dermatitis, facial fungal infection. All that can be captured very beautifully through this, and the treatment can be planned for it. मेरे साथ दो सवाल थे। एक तो सर, आजकल जो समय आ गया है, हमारी जो वुमेन्स हैं, फीमेल्स हैं, वर्किंग हो गई हैं, जो मैरिज की एज है वो भी खिसक 24 से 30 के करीब पहुँच गई है, एवरेज एज जो है। और हम देख रहे हैं दिल्ली और जितने भी शहर हैं उसमें ब्यूटी पार्लर का चलन भी बढ़ा है। जितनी हमारी फीमेल्स हैं जो हमारी, उनको एक ट्रीटमेंट फेस का सुंदर बने रहने के लिए इनका भी चलन बढ़ा है। काफ़ी पार्लर्स हमारे दिल्ली में अगर हम देखते हैं तो हर जगह नए नए पार्लर्स आज की डेट में खुल रहे हैं तो स्किन ट्रीटमेंट का। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि इस ट्रीटमेंट के जरिए या जो पार्लर के जरिए फीमेल्स ट्रीटमेंट लेती हैं, इसमें कितना डिफरेंस है? लाइफस्टाइल चेंजेस जो है स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमेशा हम उसे कर नहीं पाते हैं, और फिर भी जो है उसका असर होता है ट्रीटमेंट के ऊपर। सिर्फ यह है कि फिर कभी कभी थोड़ा सा कमती असर होगा, कभी कभी अगर उसको लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो जल्दी होगा, ज़्यादा होगा, दैट्स ऑल। अभी जैसे हम लोग कहते हैं कि आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप कॉफ़ी ना लीजिए होम्योपैथी दवाई के साथ, पर हम देखते हैं कि अगर आप कॉफ़ी भी लेते हैं तो भी आप ठीक हो जाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो the answer to your question is that in spite of the lifestyle changes, treatment still works for skin problems. With the lifestyle changes, क्योंकि आजकल फास्ट फूड people have on the fast when they're moving, and we have seen during COVID also कि warm food घर का खाना जो है वो सबसे अच्छा है, पर सब लोग नहीं कर सकते हैं। It doesn't matter, the treatment will still have an effect. Only it may take a little longer, it may be a little slower, that's all. But it will have an effect. So I think that answers your second question. And the first question. Yeah, the first question was how our treatment different? Yeah, so our treatment is different from parlor. It's totally different, completely different. And so for example, the kind of chemicals that are used in parlor treatment are different. We don't use chemicals. We are actually using active homeopathic ingredients, so which have been researched. So there's clinical research on every medicine that we are using, with effects on the skin as well as on the disorder. So it's totally different from any parlor treatment. And parlors are doing their own job. I'm saying I understand that parlors are thriving very well, not only in Delhi but in all the metros and Tier 2. And we are now as part of the Insta generation and the Instagram generation. So everybody likes to look good, feel good. There's nothing wrong in that. But our treatments are deeper, they are medical, and they are long lasting. That's the difference. थोड़ा सा अवेयरनेस मेल्स को कम रहती है और ज़्यादा कमी इसमें हो जाती है। So मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी दे रहा हूँ। आपको ये ध्यान के देखिए उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। Just so excited to tell you कि हमारे जितने पेशेंट हैं, हम लोग 75,000 पेशेंट्स हर महीने देखते हैं जो रेगुलरली आते हैं, और हमारा पेशेंट बेस है 15 लाख का है। तो जो 75,000 पेशेंट्स आते हैं उसमें से 50% जो पेशेंट्स हैं वो मेरे हैं। और इन सारे ट्रीटमेंट्स के लिए भी सर बेहद इंटरेस्टेड होते हैं, उनको भी स्किन केयर की सर उतनी ज़रूरत होती है, कई बार थोड़ी ज़्यादा, बिकॉज फीमेल्स का ऐसा होता है कि थोड़ा बेसिक केयर शायद कर लेते हैं, सनस्क्रीन लगा लेते हैं, मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, बट मेल्स में हमने देखा है कि वो केयर भी नहीं आ पाती है। सो बेसिकली दे नीड दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट
treatments much more to keep their skin healthy and radiant and young. तो हमारे यहाँ पे because it's a medical led thing, क्या होता है, मैंने का थोड़ा सा हिचकिचाहट कहाँ पे भी आ जाती है, कहाँ पार्लर में करा लेंगे, फेशियल करा लेंगे, बट बिकॉज हमारी मेडिकल सेटअप है जहाँ पे डॉक्टर एक टेस्ट कर रहा है, डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस कर रहा है, ट्रेन थेरेपिस्ट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंड डॉक्टर की प्रेजेंस है वहाँ पर, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे मेल पेशेंट्स हैं वो बेहद कंफर्टेबल फील करते हैं एंड वी हैव इक्वल नंबर ऑफ पेशेंट्स टेकिंग skin treatments for a healthier skin. The sex ratio is absolutely. So you are also most welcome to try that. So thank you very much. So what you're saying is correct. So for example, if you use this machine now and say, let us say that after 3 years या 5 साल के बाद हमारे पास इतना सारा डेटा हो जाएगा, उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं और फिर हमें पता चलेगा, जैसे हम अभी कर भी रहे हैं, जैसे हमारे 15 लाख पेशेंट्स हैं, तो मशीन लर्निंग हमें बताता है कि अगर ये पेशेंट को ये बीमारी हो और इसका ये उसका मेंटल पिक्चर ये थी, ये उसके सिम्टम्स थे और ये दवाई उसको काम करती है, इट वर्क वेरी वेल. सो दैट्स मशीन लर्निंग. So it will tell the doctor कि भाई now don't try out anything else, first try this medicine. So a similar thing which you already doing for homeopathy, we can do this in future as well. So that's machine learning, and we are already part of machine learning in homeopathy. You already initiated. Thank you. So last question. हाँ. से लेके आप हम किसी कोने में चले तो स्किन का अलग अलग कार्य है. चेहरे पर कहीं ब्लैक है, कहीं बहुत हार्ड स्किन है, कहीं बहुत नॉर्मल स्किन है. तो क्या ये सारी चीजें साउथ में चले अलग है, मध्य प्रदेश की तरफ हम चले जाएं तो वहाँ पर जो ब्लैक स्पॉट बहुत ज़्यादा है. सही. तो क्या सेरोसिस, ब्लैक स्पॉट, व्हाइट स्पॉट ये सबके ही एक तरह से काम करेगा या अलग अलग हिसाब से उसको देखेगा? नहीं, स्किन तो एक ही है ना. तो so the question is, so there are different variations of the skin, but the machine is intelligent, so it will still give you not a prejudiced view of the skin. So because if your normal skin color is dark, for example, as you're saying, and you're in South India, and you're in North India and you're fair, it will analyze the skin as a normal skin. So it is not going to differentiate or create anything which is different. प्लस आपकी इवननेस जो है ना, जो आपकी स्किन कैसी है उसको बेस में रख के कराता है, कस्टमाइज कराता है, ताकि बेस पैरामीटर आपकी नॉर्मल हेल्दी स्किन होगी, उससे विपरीत क्या चेंजेस आए हैं, इट विल हेल्प अस. So thank you very much. I am available for any one-to-one. Please wait. May I request our Group CEO, 𝗙ص𝗵𝗹 to please propose a formal vote of thanks, and then may I ask you all to join us for lunch. And I'll be still available for any other questions that you may like to ask, and so will our doctors. Thank you very much for being here. Thank you everyone. My name is 𝗙ص𝗵𝗹 and I happen to be the Group CEO, but I am really excited कि बहुत ही एकदम advanced technology हम ला रहे हैं. और एक जो सवाल इन्होंने किया था, ये AI क्या है, एक्चुअली इसमें इनके पास ये जो कंपनी ने ये बनाई है टेक्नोलॉजी, इनके पास बहुत सारे लाखों लोगों का डेटाबेस है और हर तरह के स्किन की डेटाबेस है, हर एज का डेटाबेस है. सो whatever be your age and whatever be your skin type, there is a certain mean. वो मीन के अगेंस्ट में कंपेयर करने के बाद वो एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं. तो आपका जो भी स्किन टाइप है, जो भी कलर है, उसके बेसिस पे उनके पास डेटाबेस है. तो दैट इज what is called big data, and that big data is a lot of data which cannot be just stored on many normal computers. So this is actually comparing with their original database. So it's a really advanced technology, and I'm really excited because homeopathy ऐसी चीज है जो प्राचीन कालों से आ रही है, but फिर भी it is more modern than say Ayurveda, for example, which has been there for a very long time. But having said that, this is the most modern version of homeopathy that we are presenting you, with science and technology built into it, with analysis built into it, and with a lot of proof of whatever is happening to you, which is measurable and measurable improvement built into it. And that is actually the power of Dr. Batra's homeopathy. So with that, thank you very much for joining us over here, and thank you very much for asking some very interesting questions, which actually has helped explain to everyone how good the service is. And let's now have lunch, and I hope you will enjoy the lunch as much as you've enjoyed this presentation. Thank you.